ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषये
शताभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जाड्यञ्जाबुलरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्यविभाषिणं हृदि रसद्दामाभिरामोदरं राधास्पन्दने गुरु गौरांग की कृपा से आज भी हमारी निर्विघ्न रूप से परिक्रमा संपन्न हुई। आज सवेरे निधुवन राधारमण गोकुलानंद जी राधा गोपीनाथ इन सब का दर्शन हुआ। वहाँ उनके संबंध में आप लोगों ने सुना। निधुवन के संबंध में श्रीमान महाराज भक्ति विष्णु वैभव महाराज जी बतला। Today, by the cosmic mercy of Shiva and Gauranga, we visited Sri Vrindavan. Actually, we had already visited Seva Kunj, where there is a prominence of Balita Sakhi. However, in Vrindavan there is a prominence of Vishaka Sakhi. Also, we visited the Kunda, Vishaka Kunda there. Vrindavan is the place where Swami Haridas, he manifested the deity of Bhakti. This deity, actually, we had version of this deity also. Swami Haridas was a great devotee of Lord Krishna. His disciple was Tansen. So as Srila told that how Tansen brought Akbar there once, and Akbar saw the ecstatic singing of Swami Haridas. When Akbar presented a bottle of perfume to Swami Haridas, when he offered the very expensive perfume to Swami Haridas, Swami Haridas took that bottle, opened the cap and threw away the perfume in the ground. Later on, so Akbar was lamenting, alas, alas, I had given such expensive perfume to Swami Haridas and he has thrown it away. But later on, when he went to the temple of Bhakti Bihari, he found that the fragrance of that perfume was everywhere in the air. So he realized that he had offered it, but in a very characteristic way. So Nidhi means the wealth of prema, and Nidhu actually means confidential pastimes. So it is called Nidhivan or Nidhuvan. So Nidhuvan Nagari Mohita Manasa Vikatita Kargata Bhashti. So very beautiful night pastimes, and also end of the night pastimes, Naishalila and Nishantalila take place there. So one time Srimati Radhika, she was sleeping in the lap of Sri Krishna. That time she had a dream. In that dream, she saw that very beautiful young boy was dancing ecstatically, and he was calling Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He was dancing with all his associates, and tears were flowing from his eyes because that boy was. It seemed that he was inundating the whole world by his tears. His hair was standing on his head. Sinchan Naina Paisam Padu Gandas Tanantam. Munchan Pratimahoro, Dirga Nishwas Jatam. Kuchai Karanam Karana Dirga Ayan Nado. Gauraha Prajavihari Bhava Maganashtakasti. And when he was saying Hare, it seemed that he was calling Krishna
he was in the mood of Krishna calling Srimati Radhika. And when he was saying Ram, Krishna, it seemed that he was in the mood of Radhika and calling Krishna. So, surprised by this, and Radhika felt attraction for that boy. So, Radhika, when she woke up, she told Krishna that today I had a dream. And that dream, tonight I had a dream, and I saw in the dream, he was a very attractive boy, and he even attracted my heart. So that's very surprising, because Radhika's heart is not attracted by anyone except Krishna. So that time, Krishna, what he did, on his chest, there was actually a very effulgent Kaustubha jewel. And that Kaustubha jewel actually shone very brilliantly on his chest. And within that Kaustubha jewel, Sri Krishna showed the same form of Chaitanya Mahaprabhu, dancing very ecstatically. And there again it was seen that Chaitanya Mahaprabhu was dancing there. Seeing that, Radhika became amazed. And then Krishna told that in Kali Yuga, actually, I will come in this form. I will go on the earth and I will distribute prem far and wide. That time, all the gopis, including yourself, will join me, however in the male form. It is not appropriate to join in the female form in Kali Yuga, because Kali Yuga people are very fallen. Kala Doshan Ve Rajan. This is the ocean of gods. Therefore, you all should join me in a female form and will engage in ecstatic kirtan. So another history about Vrindavan was that one time Sri Narad Muni began to narrate the pastimes of Braj Krishna. And Krishna and Balram and Subhadra, they all developed a desire to go to Braj. And they went on their chariots to Braj. Subhadra went actually to palace of Yashoda. And there she met Yashoda and she began to console Yashoda. However, Sri Krishna, he went to Vrindavan, and there Srimati Radhika was lamenting in separation of Krishna. Actually, she was almost on her 10th state, almost like very close to dying. She was sitting there lamenting, Hasto dare vinehita kapola pale, Rashanta lojala salita Snapita Prasthana Mangala Dina Vari Madhavasya, Nidra Udaya Sarubhaksha. She was not sleeping. She had kept her chin on her hand and she was waiting for Krishna. It was not known whether she was alive, because from taking her pulse, it would not be known whether she was alive. So therefore, the only sign of her existence was that a small little cotton ball, little cotton sock was kept near her nostrils. And from that little movement of that cotton sock, it was realized that she was alive. So she had complete detachment from eating. She had complete detachment from all sense gratification. Her eyes were focused on her nostril, and it was not very clear whether she was a yogini or yogini. Ahare vinati samasta vishya grame vyutti para nasadre nayanam yadita param rachakatanam mana maunam chena dinam chashunyamatam yad Krishna Mahabharate tat puryasa yogini kevipo kimva yoginas. So we're seeing that Krishna came there, and it was announced by Vishakha that, oh, Krishna has come here. Hearing that, Radhika again, she actually came back to consciousness. So this pastime took place in Vrindavan. So all this is the heart of Vrindavan, where Krishna's all desires are fulfilled. So among all the pastimes of Sri Krishna, that this Ras Leela pastime is the highest. So in this pastime, Sri Krishna danced ecstatically with all the gopis. Lakshmi Madhya Gatena Valer Vistarana Kasturi Surati Vilas Madhuri Vinyasta Bhaktiluna Krida Tanda Mandalina Parito Krishna Drisha Drisha Tam Halvisha Shanku Sangula Pada Paya Vyari. That Sri Krishna, who was in the middle of all the gopis, and all those gopis surrounded Sri Krishna, and it was like in the middle of so many beautiful jewels. There was a blue sapphire Sri Krishna who was dancing with the gopis. So this Vrindavan is the ecstatic place of Sri Krishna's Rasa Leela, Darsha Leela, and Nishanta Leela. And the speaker Narayan, very deep. Regarding
नारायण राधा राम Narayan Radhikaya Tadalaye Krishna Krishna Bhaktaya PureBhakti.Tv Namo Namaha. I first of all offer my Dandavat pranams unto my most beloved Gurudev, Om Vishnu Tattva, Om Satya Rajacharya, Astotas Rashiki Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And the same again unto all the Tridandiya Sannyas and all the Vaishnava devotees of the Lord. So Srila Gurudev has asked me to say something in brief about Radharaman. All these temples that we're going to in Sevakunj, as we just heard, are the heart of Vrindavan. These days that we're going through now are such special, auspicious days. All the most confidential pastimes are being revealed, which we're hearing. Very sacred, special stallis every place. And this Radharaman is no less than any of these others. The principal personality in Radharaman, besides Radharaman himself, of course, is Sri Gopal Bhatta Goswami. Sri Gopal Bhatta Goswami was one of the youngest of the Goswamis. He came from South India. His father Venkata Bhatta, his uncle Prabodhananda Bhatta, and Tirumala Bhatta. So these three personalities, and Gopal Bhatta, who was serving Chaitanya Mahaprabhu when he was very, very young, maybe 4 or 5 years old. He was developing a most remarkable relationship at that time with Chaitanya Mahaprabhu. And then Mahaprabhu instructed him to remain in South India, near Sri Ranga, until his parents had left this world. And then he came to Sri Vrindavan. And here he joined Rupa Goswami, was here at that time, Sanatana Goswami for some time. Srila Gopal Bhatta Goswami was serving Sanatana Goswami. In particular, he was taking his Hari Bhakti Vilas, and he was helping Sanatana Goswami, just as Jiva Goswami was helping Rupa Goswami with his Bhakti Rasamrita Sindhu and so many other works. So Gopal Bhatta was serving Sanatana Goswami in this way. Gopal Bhatta had one very beautiful shalagram, and he had been given so much ornaments, cloths and jewelry, and at one point in his life he was lamenting something. Oh, I want to decorate my Thakurji the same way as Gokulananda is being decorated, Radha Govinda is being decorated, Madan Mohan is being decorated. He was feeling this inspiration in his heart. And at that time, of course, Sri Radharaman, in the form of the Shalagram, heard his desire. And at that time, in the night, just in one night, he manifested the most exquisite form that we see today of Raman. This very beautiful form, all features very clearly defined. So Gopal Bhatta was in total bliss and satisfied, and he decorated that deity so beautifully. So in this, just behind this Radharaman temple is the Samadhi, the full Samadhi of Srila Gopal Bhatta Goswami. So when we take shelter of Radharaman, we're considering this beautiful pastime of the manifestation of this deity from the desire of Gopal Bhatta Goswami. This is one of the principal temples of Vrindavan. All these temples that we've been visiting are the principal temples of Vrindavan. So this Sri Radharaman is a very powerful place for us to take shelter and beg the mercy of Gopal Bhatta Goswami, and to understand this relationship between Gopal Bhatta Goswami and his Thakurji. How special was that relationship? So this savor has been carried on very nicely from that time. And he is with Sanatana Goswami, he's representing this Sambandha Gyan. निर्मल में राधारानी और गोपियों के साथ में कृष्ण का रास हुआ। विशाखा को प्यास लग गई तो उन्होंने अपने बेलू से एक सरोवर पैदा किया जिसको विशाखा कुंड कहते हैं। सेवा कुंड में ललिता कुंड है, यहाँ पर विशाखा। कुछ दिन के बाद में यहीं पर निर्माण संप्रदाय के हरिदास
किसी को राधा पंथ बिहारी विग्रह मिली, पहले वहां स्थापित थी, पीछे मंदिर में बन जाने के बाद में यहाँ पर आ गई। दूसरी बात, एक दिन राधा जी ने स्वप्न देखा और कृष्ण से कहा कि हमने एक स्वप्न देखा कि वृंदावन है, यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, निकट में गोवर्धन पर्वत है, वहां पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोयले हुआ कर रहे हैं, और देखा एक सुंदर ब्राह्मण कुमार, बहुत ही सुंदर, वो नृत्य कर रहा है और कभी कभी हे कृष्ण कहता है और कभी कभी हे राधे कहता है। जब वो हे कृष्ण कहता है, मुझे मालूम होता है कि मैं ही कह रही हूँ, और जब हे राधे कहता है तो मुझे मालूम होता है कि आप ही वो कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन ब्राह्मण कुमार है। कृष्ण कहा, कृष्ण कुछ मुस्कुराने लगे और बोले, जैसे मैं तो नहीं जानता कि ब्राह्मण कुमार है। राधा जी ने कहा कि हमको तो मालूम होता है कि आप ही थे। कृष्ण बोले जी, हाँ किया, मैं भी वही था, वही हूँ। तुम्हारा स्वप्न ठीक है, मैं कलयुग में तुम्हारे भावों को आस्वादन करने के लिए ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और तुम्हारी भाव कांति, अंग कांति और भाव दोनों को लेकर के उसका आस्वादन करूंगा। और तुम भी ब्राह्मण के रूप में, हमारे परिकर जितने हैं वहां पर पुरुष के रूप में सब आएंगे, हमारे परिकर। इस तरह से राधिका जी ने कहा कि हाँ, हमारा जो स्वप्न ठीक है। ये वहीं पर हुआ। राधा गोकुलानंद जी चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदे कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमान् भक्तिवेदान्त नारायणिति नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Shri Gurudev has instructed me to speak about Shri Radha Gokulananda temple, Mandir. Radha Gokulananda, in the courtyard first, we see the samadhis of Shri Lokanath Das Goswami, Shri Narayan Thakur, and Shri Vishwanath Chakravarti Thakur. Shri Lokanath Das Goswami, he was a very close friend of Shri Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu instructed him to go to Vrindavan. And Narayan Thakur, Lokanath Das Goswami, he went to Vrindavan, and before the 6 Goswamis came, and with Shri Bhugarva Goswami, whose samadhi is in the courtyard of Shri Radha Damodar temple, they associated very closely. It said they were like one soul and 2 bodies. Bhugarva Goswami is so called because he performed bhajan in a hole in the ground. So Lokanath Das Goswami was here,
he had taken a vow that he would not accept any disciples. But when the three, Prabhu Troy, Srinivas, and then Narottam and Shyamananda came, so Narottam Thakur had a very strong desire that he would be disciple of Sri Lokanath Das Goswami. So he began to serve. I think we've already heard. We've already heard how Narottam Thakur was serving Sri Lokanath Das Goswami by cleansing the place where he was passing through. And after some time, Lokanath Das Goswami hid himself to find out who was doing this. He caught hold of Narottam Thakur. Narottam, although he was performing such a menial task, he was actually the son of a king, coming from a very, very rich and opulent family. But he put his heart at the lotus feet of his beloved Gurudev and prayed that his Gurudev would, that Lokanath Das Goswami would accept him as disciple. So Lokanath Goswami accepted him, gave him Diksha. Then, after some time, Narottam Thakur and Lokanath Das Goswami, they were chanting Harinam. And a farmer came, very thirsty. So he asked Lokanath Goswami for water. Lokanath Goswami simply continued chanting. And then he asked Narottam Thakur. So Narottam Thakur stopped chanting, put aside his beads, he gave water to the farmer, and then continued chanting. After this, Sri Lokanath Das Goswami said, "You're not fit to be here. Don't you know that if you're serving Harinam, you're serving anyone, everyone. There's no need to stop your chanting to perform welfare activity." So apparently very harsh, he sent Narottam Thakur away. But actually he was sending Narottam Thakur away for preaching so that he could bless the whole world with his very wonderful preaching. After Narottam Thakur, 3 generations after Narottam Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur was performing bhajan in Vrindavan. So Vishwanath, his samadhi is also there in the courtyard there. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is a very great acharya, very rasi. He wrote Sri Krishna Bhavanamrita, and also a very great scholar. So some of his purports, he's explaining in a very wonderful way how Saraswati, for example, is sitting on the tongue of Hiranyakashipu when he's chastising Prahlad, sitting like this, explaining in a very beautiful way the hidden purports. He's written a wonderful commentary on 10th canto Srimad Bhagavatam, Sararga Darshini, and our Gurudev has quoted from this in his commentaries on Shri Gopiki, for example. In the temple itself, on the altar, is Radha Vinod, the deity of Sri Lokanath Das Goswami. So Lokanath Das Goswami, he manifested Radha Vinod. Sometimes it's said that a Brahmana came and gave, sometimes it's said that he found in the Kunda. So Radha Vinod was very, very eager to accept service from Sri Lokanath Das Goswami. He spoke to Lokanath Goswami. He said, "I'm very tired, please give me somewhere nice to rest." So Lokanath Goswami gave him a nice bed. And then he said, "It's very hot, you should fan me." So Lokanath Das Goswami is fanning the deity. He said, "I'm hungry, I want something to eat." So Lokanath Das Goswami immediately prepared some nice hope for Krishna. And he said, "Chutney is needed." So then in this way he was ordering very, very sweet, wonderful, miraculous relationship between Sri Lokanath Das Goswami and Radha Vinod. So Radha Vinod is there on the altar. And then there's also Radha Gokulananda of Krishna Chakravarti Thakur. Tiny little deity. He used to carry around his bead bag. And also on the altar is the deity of Sri Baladevi Jabutsan Prabhu, who is the very beloved, dear beloved disciple of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. And then there's the small Govardhan Shila of Sri Raghunath Das Goswami. And one can see even the thumbprint of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this Govardhan Shila. So this Radha Gokulananda Mandir is very, very dear to the Gaudiya Vaishnavas. And so we're very fortunate to have darshan of these samadhis and deities on the altar.
Hare Krishna. Vanchakalpa Prabhusha Vipasam Prabhusha Vipasam Prabhusha. जीव राधा गोपीनाथ बांग्ला भाषा में ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दनामि गुरुपाद धर्म ओम ऋषि भरस्पति श्रीमद् भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलते अनंत कोटि गुण ज्ञापन करी। तो হচ্ছে আমার প্রথমবার এরকম হরিকথা বলার সৌভাগ্যবানের সামনে ওই জন্য একটু লজ্জা লাগছে যখন আপনার সঙ্গে আসো আর একটু কথা শুনো। গুরুদেব আদেশ করেছেন যে গোপীনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলবার। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জন্য তিনটা ঠাকুর প্রধান, গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদন মোহন। মদন মোহনজি হচ্ছে সম্বন্ধের জন্য। যদি আমরা ভগবানের সাথে সম্বন্ধ যদি করতে চাই, মদন মোহনের সাথে সম্বন্ধ করতে হয়। অবিধেয় হচ্ছে গোবিন্দজি এবং গোপীনাথ হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনের ঠাকুর। বৈষ্ণবগণ বর্ণন করেছেন যে যখন বদ্রনাথ মন্দিরকে স্থাপন করছিলেন ওই সময় তিনি উত্তরের মার কাছে গিয়েছেন আর বলছেন কৃষ্ণ দেখতে কেমন, আমরা কিছু ঠাকুর বানাবো। একটা ঠাকুর বানিয়েছেন, সেটা ছিল মদন মোহনজি। উত্তরে দেবী বলেছেন যে এই তিন চরণের কৃষ্ণের চরণ স্বতিক আছে, খুব ভালো কৃষ্ণ চরণের মতন, মানে চরণটা ঠিক চলছে। আমার বাংলা ভাষাটা কষ্ট হয়ে গেল। তারপরে গোপীনাথ গোবিন্দ দেবকে আবার বানিয়েছেন আর বলেছেন একটা স্বতিক, একদম নাভের মতন দেখতে, কৃষ্ণের নাভের একই লাগে, নাভিটা বক্ষস্থলে। আর গোপীনাথ ঠাকুরকে বানিয়েছেন আর সে মুখমণ্ডল ঠিক কৃষ্ণের ঠিক মুখমণ্ডলের মতন আছে। তাই জন্য আমরা আজকে গোপীনাথ মন্দিরে গিয়েছি, দর্শন করেছি, গোবিন্দের ঠিক মুখ কেমন দেখতে আমরা দেখতে পেরেছি। এই যখন প্রকট হলেন ব্রজেতে, এক বৈষ্ণব পরমানন্দ যমুনায় স্নান করতে গিয়েছেন আর যমুনার জল বালিকে সাইড করে নিয়েছেন আর ওইখানে মন্দিরটা প্রকট হলেন। আর পরমানন্দ ঠাকুর ওইটা নিয়ে আর মধু পণ্ডিতকে দিয়েছেন। আগে বংশীবতের কাছে অর্চন হতো আর এখন নতুন মন্দির করেছে আর ওইখানে স্থাপন হয়েছে। আজকাল ওই ঠাকুরটা জয়পুরে চলে গেছেন, যখন মুসলমানের রাজা আরামসেন এইখানে অনেক আক্রমণ করছিল, জয়পুরে নিয়ে গেছে। ওই জন্য আমাদের খুব ভাগ্য আছে যে ওই মন্দিরে যেতে পেরেছি বৈষ্ণবের সঙ্গে। আর
हमारा माधुर्य का गंभीर हल्के कल हमने पाठ किया कि भक्ति देवी स्वप्रकाश है। भगवान जैसे सच्चिदानंद है, भक्ति भी स्वप्रकाश है। कृष्ण जैसे यदुवंश में कृष्ण के रूप में और रघुवंश में रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं स्वेच्छा से, किसी के दबाव से, किसी के कारण नहीं, अपने आप जब इच्छा होती है तो आते हैं। ऐसे भक्ति देवी ही स्वतंत्र अपनी इच्छा से जहाँ इच्छा हो अत्यंत पापी व्यक्ति के हृदय में भी आ सकती है, परम बुद्धिमान उत्तम कुल में जन्म लिया हुआ सदाचारी व्यक्ति के भी हृदय में नहीं आ सकती है। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब वो बतला रहे हैं भक्ति किसी कर्म के, योग के, ज्ञान के, तपस्या के अधीन नहीं है। यदि कोई अच्छा कर्म करेंगे तो भक्ति होगी, इसलिए कहते हैं ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी भागवत के श्लोक में अभी कल मैंने बताया जदृच्छया। जदृच्छा माने क्या? स्वेच्छा, अपनी इच्छा से प्रकट होती है। इस श्लोक की श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की। जदृच्छा माने कहा जदृच्छा केनापि भाग्योदयेन, किसी भाग्य से। जदृच्छा का शब्द का अर्थ है किसी भाग्य से। इस व्याख्या के अनुसार में शुभ कर्म से भी एक भाग्य का उदय होता है और एक भगवान की कृपा से कुछ भक्ति संबंधी, भक्ति धाम संबंधी कुछ सुकृति उदय होने से भी भाग्य होता है। अतः भक्ति का कार्य यदि मान लिया जाए तो भक्ति कर्म के अधीन हो पड़ती है या भगवान के कृपा के अधीन हो पाती है, उसकी स्वतंत्रता नहीं रही। इसलिए ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं केनापि भाग्य उदयेन। यहाँ ऐसी व्याख्या नहीं करनी होगी जैसा कि श्रीधर स्वामी जी ने कहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, जदृच्छा माने महत्संग, महत् पुरुषों के संग से ही भक्ति उत्पत्ति होती है। बतलाएंगे व्याख्या करके महत्पुरुष कौन है। यदि जदृच्छा शब्द का हम व्याख्या किसी भाग्य के उदय से होता है, ये यदि अर्थ किया जाए, जदृच्छा में तो स्वतंत्र स्वेच्छा पूर्वक। यदि इसकी व्याख्या यदि हम करते हैं श्रीधर गोस्वामी के अनुसार में किसी भाग्य से, तो यहाँ तो प्रश्न उठता है कि किस भाग्य के द्वारा? भाग्य के द्वारा शुभ कर्म करने से एक प्रकार का भाग्य उदित होता, उस भाग्य से नहीं, कदापि। यदि शुभ कर्म जनित भाग्य को स्वीकार किया जाए तो शुद्ध भक्ति कर्म के अधीन हो जाती है, शुभ कर्म करने से ही भक्ति हो जाती है, किंतु ऐसा नहीं। ऐसी दशा में भक्ति कर्म के परतंत्र हो जाएगी, ये दोष आ जाता है और स्वप्रकाश भक्ति नहीं रही। भक्ति को समस्त शास्त्रों में स्वप्रकाश, अपनी
अपनी स्वेच्छा से किसी के हृदय में प्रकटित हो सकती है, ये लिखा है समस्त श्रुतियों में, स्मृतियों में, भागवत में, सर्वत्र ऐसा ही लिखा गया है। ये हमने कल बताया था, ये भगवान के भांति सच्चिदानंद भगवान है और उनकी शक्ति सच्चिदानंद व्यक्ति, जिसमें आनंद की प्रधानता है और संबित और संदिनी गौण रूप में है। उस व्यक्ति का नाम भक्ति है। भक्ति को परतंत्र मानने से और उसकी प्रकाशिता को अस्वीकार करने से श्रुति वचनों की अवहेलना नहीं, निषेध होता है। द्वितीयतः उस भाग्य को शुभ कर्मों के अभाव जनित कहा गया। शुभ कर्म नहीं, बिना शुभ कर्म के ही यदि मान लिया जाए तो ऐसा होना पर भाग्य कौन, भाग्य होने का कारण क्या है, उस कारण तो चाहिए जो भाग्य हुआ। तो वो भाग्य अज्ञात रहने से वो भाग्य असिद्ध है। जो स्वयं सिद्ध असिद्ध है वो दूसरे को कारण कैसे बन सकता है? तो स्वयं ही असिद्ध है जो कौन सा है, तो भक्ति को क्या स्थापित करेगा? तृतीयतः यदि भगवान की कृपा को भगवान का उदय मान लिया जाए, भक्ति भगवान की कृपा से होती है, ऐसा कहा भी है। भगवान की या भक्तों की कृपा से भक्ति होती है। तो फिर तब भगवान की प्राप्ति का कारण भक्ति की कृपा, तब उनकी कृपा, भगवान की कृपा का कारण क्या है? भगवान क्यों कृपा करके भक्ति उदय उसके हृदय में कराते हैं? तो फिर उसका कारण क्या है? उत्तर उत्तर ढूंढने पर कोई निश्चित कारण नहीं होने से ये भी अनवस्था का दोष है। भाग्य का कारण क्या बना, ये ठीक नहीं हुआ। यदि भगवान के हेत की कृपा को भाग्य का उदय मान लिया जाए, कि भगवान की अहेत की कृपा से ही भक्ति हृदय में उदित हुई, तो इसमें दोष क्या है? भगवान सर्वथा समदर्शी है, सब जगह उनकी सब। अतएव किसी पर वो दया करते हैं, किसी पर नहीं दया करते हैं, उन पर यह दोष है। समदर्शी होकर के किसी के हृदय में भक्ति प्रवेश कराते हैं, किसी के हृदय में नहीं, तो ये समदर्शी नहीं हुआ। इसलिए भगवान में विषमता का दोष होता है कि भगवान ऐसे करते हैं विषम। यदि कोई कहो कि भगवान में विषमता का दोष नहीं है, क्योंकि वे भक्तों का पालन करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। असुरों का यदि संहार करते हैं कि तो वो भी कृपा है, उसको मुक्ति इत्यादि दे देते हैं, उसका संसार नष्ट दूर करके के और मोक्ष दे देते हैं। कहते हैं दुष्टों को दमन करने में और अपने भक्तों का पालन करने में जो विषमता देखी जाती है वो दोष नहीं, बल्कि उनका महत्व भूषण है और उनके महान गुण का परिचय है। क्योंकि भगवान में भक्त वात्सल्य गुण अन्य समस्त गुणों से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान में जितने भी गुण हैं, भक्त वात्सल्य उनमें सबसे अधिक गुण है। विशेषतः असुरों के संहार में भी भगवान की महत कृपा है, उनको मार करके मुक्ति दे देते हैं। यदि
जो मुक्ति बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, वो उनको दे दिया कि ये तो बड़ी कृपा है। कहते हैं नहीं भाई, भगवान में विषमता का दोष लगेगा, उनको दिया क्यों भक्ति और उनको नहीं दिया, कभी कहते हैं इसलिए नहीं। तो फिर तो जैसे कहा ना, महत कृपा के द्वारा भक्ति का उदय होता है, यही ठीक है। तो इसमें भक्ति की स्वप्रकाशकता नष्ट हो गई हो, नहीं। इसमें आप विचार करते हैं जो उत्तम महाभागवत है उनकी कृपा, वो भी समदर्शी भगवान के समान होते हैं, उनमें भी भगवान के गुण होते हैं। इसलिए जो महाभागवत हैं, सुखदेव गोस्वामी जी और ऐसे लोग हैं जो उत्तम महाभागवत हैं, उनकी कृपा से नहीं, उनमें भी समदर्शिता